Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC Class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lesson. So friends, what we are going to study today, what we will study today, that is today's topic is structured query language. Yes, which is also known as a SQL, or somebody call it as the SQL. So the contents of today's topic are, we are going to study what is meant by the SQL, that is SQL, then SQL classification, then running queries in MS Access, then we are going to create tables using the SQL, and next we are going to study how to insert data into the table by using the SQL. So let's get started with the today's topic. Okay. So just I will firstly introduce you what is mean by the SQL. That is nothing but the structured query language. Okay. So first is introduction. I will show you what about the structured query language and what it means. The SQL is a SQL. That is, it is somehow pronounced at the SQL और SQL. आप लोग दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन जो है उसके लिए यूज कर सकते हो. Just remember, it will be written as SQL, or we can pronounce it as the SQL. So इसके लिए हम लोग ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो यूज कर सकते हैं, SQL और SQL. ठीक है. अभी SQL और SQL और SQL ये सारों का मीनिंग एक ही है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मीन बाय द SQL एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डेटाबेस. So I will say that it is the heart of the database. It is whole and soul for the big databases also. देखिए SQL जो होता है वो क्या होता है, जनरली इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेसेस. हम लोगों ने पहले भी देखा था what is meant by the relational databases. Okay, so according to ANSI, that is American National Standards Institute, we can say that the SQL is the standard language for relational database system, and it is used to perform the task such as we can insert into it, then we can update the data from the table, then we can delete the different data from the table, and we can update. That is, आप लोगों को अगर डेटा स्टोर करना है एक डेटाबेस में, उससे कुछ डेटा रिट्राई करना है, फिर कुछ डेटा लेना है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है SQL जो है यूज कर सकते हैं. या फिर अगर आपको उस पर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करने हैं, तो वो भी हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि अपडेट होता है, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है और मॉडिफाई होता है. हम लोगों ने पहले भी MS Access में देखा था, दैट इज हाउ टू यूज द डिफरेंट क्वेरीज हियर. बट the SQL queries are somehow different from the query views, which you have seen before in previous lectures in MS Access. ठीक है. Some I will tell you about the some common examples of the SQL databases. ठीक है. कॉमन एग्जांपल्स कौन से देखेंगे, MySQL, then Oracle is there, then IBM DB MS is there,
then PostgreSQL is there. So ऐसे ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स है हम लोग यूज कर सकते हैं. देन उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का भी जो है वो SQL सर्वर जो है वो अवेलेबल है. ठीक है. सो लाइकवाइज वी कैन यूज दिस. सो आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं SQL का, सो फॉर दैट पर्पज यू आर गोइंग टू यूज MS एक्सेस. ठीक है. हम लोग ने पहले भी MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे यूज करना है वो सीखा है. तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू यूज क्वेरीज इन MS एक्सेस वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग ओपन ऑफिस में भी होता है SQL. ठीक है. these are some of the common examples of the SQL databases. So अभी हम लोग वो देखेंगे, that is next point we are going to see, that is SQL classification. SQL classification कैसे करते हैं वो पॉइंट अभी हम लोग स्टडी करेंगे, और इसे करना कैसे वो भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. देखिए SQL classification, how it is done, that is structured query language classification is going to done on the creating and deleting, updating or inserting data onto a particular relational databases. वो डेटाबेस में जो है वो जनरली टेबल्स जो है वो रहते हैं. सो ये सब क्या होते हैं एक्चुअली, these are nothing but the set of the queries or the set of the relations on which we are going to perform the different operations, right? So we can classify the SQL स्टेटमेंट्स के जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द SQL स्टेटमेंट्स. सो देखिए जो पहला वाला क्लासिफिकेशन होता है हम लोग कह सकते हैं उसके लिए DDL. ठीक है. सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. देन नेक्स्ट वन इज द DML, that is data manipulation language. ठीक है. So likewise we can classify between the DDL and data manipulation. So DDL को भी हम लोग अभी और क्या कर सकते हैं, these are nothing but the commands. These are nothing but the commands. तो ये कमांड क्या है, we will see one after one. So पहले हम लोग देखेंगे what is mean by the data definition language. These points are very important. So first one is DDL commands. Okay. DDL means data definition commands or data definition languages. So यहाँ पर हम लोग ऐसे कमांड्स यूज करते हैं जैसे कि डेटा डिफाइन कैसे करना है, लाइकवाइज हाउ टू क्रिएट डेटा, देन हाउ टू डिलीट डेटा, देन हाउ टू ड्रॉप द टेबल्स. ये सारे जो है टेबल रिलेटेड ऑपरेशंस जो है हम लोग कर सकते हैं. देन ग्रांटिंग और गिविंग सम प्रिविलेजेस और रोल्स टू यूजर्स और द क्लाइंट्स और सर्वर्स, ये सारी चीजें भी जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो है वो इंक्लूड की जाती है. देन इनके साथ अगर कुछ कोई मेंटेनेंस कमांड्स जो है आप लोग यूज कर रहे हैं, देन दैट मेंटेनेंस कमांड्स आर आल्सो गोइंग टू बी यूज्ड विद द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कमांड्स. सो SQL provides many different commands for the many different purposes. So we are going to use the different commands as per our requirements. हमारी जैसे requirement रहेंगे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वो कमांड्स जो है वो यूज करते जाएंगे. ओके. देखिए अभी फर्स्ट वन इज व्हाट आई सेड, दैट इज क्रिएटिंग द रिलेशंस और टेबल or tables. Then why these commands are used for the next purpose, deleting or dropping the relations. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दैट इज आफ्टर क्रिएटिंग देन ड्रॉपिंग देन अल्टर जो होती है वो भी हम लोग यूज करते हैं फॉर अल्टरिंग
द रिलेशंस, उसके लिए भी DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो यूज होती है. Then next thing what we can say that after creating, dropping or altering, we are going to granting and provoking the access and privileges to the particular different users, that is roles. Granting the roles. The next thing what we are going to say, that is privileges, granting the privileges. So ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डेफिनेशन यूज कर सकते हैं. Then some of the maintenance commands are used for the data definition languages, that is DDL commands. So उसके बाद जो next thing आती है, that is data manipulation language, which is also known as the DML. So यहाँ पर आती है different DML commands. देखिए डेटा डेफिनेशन में मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटा डिफाइन कर रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेबल्स बना रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेबल डिलीट कर रहे हैं, या फिर कुछ टेबल के रिलेशंस जो है हम लोग अल्टर कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो डेटा डेफिनेशन में आती हैं. सो अभी डेटा मैनिपुलेशन में क्या आता है, देखिए जनरली डेटा मैनिपुलेशन में जनरली इंसर्टिंग डेटा आएगा. उसके बाद हम लोग कह सकते हैं अपडेटिंग द डेटा, ये सारी चीजें जो है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल कम अंडर द डेटा मैनिपुलेशन. देन नेक्स्ट वन इज दैट इज थर्ड वन इज द TCL. So ये जनरली फॉर यूज होते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स. So what we can call it as the transaction control commands or language. ठीक है, अभी देखिए ट्रांजैक्शन में कौन सी कमांड्स आती हैं. आई विल इंसर्ट इट हियर आल्सो. TCL, that is transaction control language, or we can say commands. TCL में जनरली कौन सी कमांड्स आती है, द कमांड्स विच आर रिलेटेड टू द managing and controlling the transaction, that is we can say that the transaction is the one complete unit of the work which involves the many steps. So for example what we can say here, that is making changes to database, which will be what, permanent. Then what we can say, the second thing is that in undoing the changes to the database, which will be also permanent. Then what we can say, the third step is that is creating the save points. ठीक है, अभी क्रिएशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करंट ट्रांजैक्शंस. तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स में आती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, दैट इज आई विल से दिस. So now the next point which we are going to study is, देखिए पहले हम लोगों ने क्या देखा, the classification of different SQL statements, that is data definition language commands, then data manipulation language commands and transaction control language commands. So हम लोग इसमें से जितनी है उतनी commands ले लेंगे, जितना possible होगा उतना. So देखिए यहाँ पर हम लोगों ने data definition language में देखा, then data manipulation में देखा, यहाँ पर inserting, updating, then
डिलीटिंग आता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन जो होता है वो भी आ जाता है यहाँ पर, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। ये सारी चीज जो है वो डेटा मैनिपुलेशन में आती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में मेकिंग चेंजेस टू डेटाबेस परमानेंटली, अनडूइंग चेंजेस दी टू द डेटाबेसेस परमानेंटली, देन क्रिएटिंग सेव पॉइंट्स जो है वो चीजें आती हैं। उसके बाद दी सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर दी करंट ट्रांजैक्शंस। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज हाउ टू क्रिएट दिस SQL क्वेरीज इन आवर MS Access. So next one we are going to study is creating queries in MS Access. Okay, so now we are going to study this point, how to create the queries in our MS Access. उसके बाद हम लोग creation जो है वो actual देखेंगे. So I will open the MS Access here. I will choose here now the blank database. अभी हम लोग दे देंगे इसके लिए नाम SQL Chapter. ठीक है, अभी यहाँ पर रेडीमेड टेबल जो है वो MS Access में बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाता है। हम लोगों में पहले भी यूज किया था MS Access और डेटाबेस। सो ये रेडीमेड टेबल जो है मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर ओपन है, सो आई विल क्लोज इट नाउ। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए क्रिएट में जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर क्वेरी विजार्ड जो ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, फिर क्वेरी डिजाइन में भी जा सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन क्रिएट द डिफरेंट क्वेरीज आल्सो। सो अभी हम लोग क्या जाते हैं, फिर क्वेरी डिजाइन में जाते हैं। ओके, सो मैंने क्वेरी डिजाइन व्यू चेक कर लिया। देखिए मैं क्लोज कर देती हूँ। आप लोग फिर से देखिए, मैंने टोटली MS Access का ब्लैंक डेटाबेस जो है वो ले लिया है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए I will go to the create, then I will use the query design here. Okay, create a new blank query in a design. So you can then use the show table dialog box to add tables or queries to the query design. Okay, so for now ये क्या कर देते हो, इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये कैसे यूज करना है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ था। सो आई विल क्लोज दिस नाउ। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी हमको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हो, डिजाइन व्यू है और यहाँ पर SQL व्यू है। यहाँ पर हम लोग ये टूल बार से भी जा सकते हैं, या फिर आई विल क्लिक ऑन राइट क्लिक हियर एंड आई विल गो टू दी SQL व्यू। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो, या फिर आई विल चूज दी डिजाइन या फिर SQL। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधा ब्लैंक। सो यहाँ पर जो है हम लोग हमारी MS Access में SQL जो है हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अभी SQL की क्वेरीज जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो पहले अभी हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग क्वेरीज, दैट इज हाउ टू क्रिएट क्वेरीज इन MS Access। वो स्टेप हमारे पहले हो गए, कैसे यूज करना है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें क्या क्या यूज करना है हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग टेबल इन MS Access। तो अभी देखिए यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो टू क्रिएट अ टेबल इन MS Access वी आर गोइंग टू यूज द सिंटैक्स लाइक दैट। देखिए उसके लिए हमको एक प्रॉपर सिंटैक्स जो है वो यूज करना है। सिंटैक्स किस तरह रहेगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी ये टेबल नेम जो है, देखिए क्रिएट एंड टेबल में नहीं है,
इंटेंशनली कैपिटल लिखा है क्योंकि दीज आर दी कीवर्ड्स, यानी कि आपको एज इट इज यूज करनी है। चेंज आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर टेबल नेम यू कैन गिव ऑफ दी योर चॉइस। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, लेस देन ग्रेटर सिंबल, दैट इज दिस इज नथिंग बट द टैग्स। ये टैग्स के अंदर मैं टेबल नेम दे देती हूँ। टैग्स के अंदर देखिए, अभी आज आगे से हम लोग सिक्वल का जो भी स्टडी करेंगे वहां पर देखिए टैग्स आर नथिंग बट दी नेम्स दैट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसके अंदर के आप लोग कुछ भी नेम्स लिख सकते हो, बट दीज आर दी प्रॉपर सिंटैक्सेस एंड प्रॉपर कीवर्ड्स दैट यू कैन नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, अब ये सिंटैक्स हम लोगों ने यूज कर लिया। देन यहाँ पर ब्रैकेट्स आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, बट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई एम maintaining the spaces, that is I am going to the next line, और लास्ट को सेमीकोलन। ये जनरली सिक्वल की कौन सी भी क्वेरी जो है आप लोग यूज कीजिए, ये प्रॉपर सिंटैक्स जो है वो आपको मिलेगा, दैट इज here will be, that is starting syntax somewhere, then middle whatever the conditions you are going to write, and that conditions are going to happen going to be put inside these braces। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है आप लोग क्या करोगे, कंडीशंस जो है वो पुट करेगा, और लास्टली सेमीकोलन। ये जो है आपका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। ठीक है, सो अभी मैं इसको नेक्स्ट लाइन को ले जाती हूँ। अभी देखिए टेबल हम लोगों को क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नेम देंगे उसके लिए, और उसके लिए उसका डेटा टाइप जो है हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, एंड साइज दे देंगे। ठीक है, सो ये कॉलम नेम 1, अगर हमको एक से ज्यादा कॉलम लेने, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट का रोल नंबर है या फिर स्टूडेंट का नेम जो है हमको यूज करना है वो। ठीक है, देन कॉमा, सो यहाँ पर मैं अभी लिखूंगी कॉलम नेम 2, देन डेटा टाइप, देन साइज, एंड लास्टली सो ऑन। जितने चाहिए आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें टेबल्स जो है वो ऐड कर सकते हो। फिर हम लोग अपना सिंटैक्स जो है वो क्लोज करेंगे और उसको सेमीकोलन दे देंगे। ये है टेबल क्रिएट करने का प्रॉपर सिंटैक्स। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्रिएट टेबल इज TDL कमांड, दैट इज डेटा डेफिनेशन कमांड। क्रिएट टेबल जो है वो डेटा डेफिनेशन में देखिए हमें क्रिएटिंग द रिलेशंस और टेबल्स यहाँ पर आती है। सो द MCQs कैन बी आस्क्ड फॉर द फाइनल एग्जाम्स, दैट इज create table is which type of the command, that is data definition language command is there। अभी देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, that is before issuing the create table command हम लोगों को क्या करना है, make sure that there is some parent database there। अभी हम लोग क्या करें, डायरेक्टली MS Access को यूज करें, इसके लिए हम लोगों को फिलहाल के लिए कोई parent database की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बट अगर आप लोग डायरेक्टली सपोज माई सिक्वल यूज कर रहे हैं या फिर एम्बेडेड सिक्वल यूज कर रहे हैं या फिर पोस्ट के सिक्वल जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पेरेंट डेटाबेस जो है वो कौन सा है वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखिए हम लोग एक सिंपल क्वेरी बनाएंगे विद एग्जांपल, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सो फॉर एग्जांपल देखिए क्रिएट table name will be the student, and I will write here roll number, और हमको क्या करना है, उसका साइज देना है, एंड पहले उसका टाइप, ठीक है, इंटीजर, then I will write s name, that is student name, which will be what, character of 20, एंड लास्टली सेमीकोलन। ये हो गया आपकी फिर देखिए अभी यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट टेबल जो है वो कॉमनली ले गया, टेबल नेम हम लोगों ने कौन सा दिया, स्टूडेंट दे दिया। अभी हमने 2 ही कॉलम दिए हैं, रोल नंबर विच इज इंटीजर, देन स्टूडेंट नेम एज दी कैरेक्टर 20। सो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे,
डिफरेंट टेबल्स जो है वो बनाएंगे. ओके, सो आई विल यूज द MS एक्सेस हियर. ओके, अभी यहाँ पर मैं करूंगी क्रिएट टेबल. देखिए, if you are able to see what I am going to do here, you can see that is how to use the different queries. देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्रिएट टेबल जो है वो एज इट इज लिख दिया. उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट. ओके, एंड मैंने क्या कर दिया, आई थिंक इट वाज रोल नंबर इंटीजर कॉमा स्टूडेंट नेम as character, right, and character size will be of 20 and semicolon. ठीक है, अभी ये लिख दिया, पर हमको टेबल लिखने के बाद क्रिएट होगा ऐसा नहीं है. देखिए, सिंटैक्स लिख लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वेरी जो है वो रन करनी है. रन करने के बाद ही आपका जो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा. देखिए, आई विल ट्राई टू रन इट. देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है एंड आई विल ट्राई टू ओपन इट. देखिए, रोल नंबर and student name, ये दो fields, that is these two columns are added in the table name which is named as the student. Okay, I hope you understood this concept. कैसे करना एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ. अभी ये फिलहाल के लिए सेव नहीं करूंगी. हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट. अभी मुझे क्या करना है, क्वेरी डिजाइन में मैं जाऊंगी. देन सिक्वल व्यू में यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ या फिर यहाँ से भी सिक्वल व्यू ले सकती हूँ. अब एक और टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ. क्रिएट टेबल अभी मैं ले लूंगी student2 and I will write it as the same type, that is roll number integer, then student name as suppose I am going to take varchar of 50. Okay, and I will try to run it. देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो है वो रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम से दो टेबल्स जो है वो क्रिएट हो गए. आई विल क्लोज इट नाउ. आई विल क्लोज दिस क्वेरी आल्सो. आई विल नॉट सेव इट फॉर नाउ. सो अभी मैं क्या कर देती हूँ, हमको एक ही टेबल लगेगा तो मैं पहले वाले टेबल को जो है वो डिलीट कर देती हूँ. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा इंटीजर एंड कैरेक्टर क्या है. इसका पहले भी हम लोगों ने MS एक्सेस में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था. बट लेट मी टेल यू अबाउट द commonly used data type. So पहला जो है वो है int, that is it is going to store, it stores the integer values in the range of, so इनकी रेंज देखिए क्या होती है, -214 784, -214 that is 748, then 36 482 plus 2147 483647. सो ये जो है वो इंटीजर की आपकी रेंज रहेंगी. देन नेक्स्ट वन इज द डेसिमल. सो ये डेसिमल क्या करता है, द डेसिमल स्टोर्स द रियल और decimal values with exact precision. Then next one is the character. So character is going to stores fixed length strings with a maximum. यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग्स जो है विथ अ फिक्स्ड मैक्सिमम साइज ऑफ 255 कैरेक्टर्स.
स्टोर करते हैं. Then next one is the varchar. Now varchar is going to store, that is varchar stores variable length strings with a maximum size of 65535, that is 65,535 characters. इन varchar के बाद हम लोग यूज करेंगे date. Yes, obviously you already know about that. It is going to store, that is, it is going to store the date values in the format of what we can say YY, MM and DD format. Then lastly we are going to use the 6, that is date time. So date time generally stores date values as well as the time values in the format of YYYY, MM, DD and what we can say the next hours, minutes and seconds respectively, format respectively. So these are nothing but the most commonly used data types in SQL. So we can use anything of our choice. देखिए ये जो हो गया, ये तो हो गया आपका डेटा. फर्स्टली क्रिएटिंग द टेबल्स. ओके, क्रिएटिंग टेबल्स हो गया. उसके बाद हमको क्या देखना है? इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल. सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग वो देखेंगे. After creating table in MS Access, how to insert the data into the table. So next thing what we are going to study is inserting data into the table. So before proceeding, let me tell you about insert is the DML command, that is data manipulation language command. देखिए you can see here, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं inserting the data manipulation command जो है ये यूज कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों ने create से क्या कर लिया? कॉलम ऐड किए. By using the create command we have created the columns. So by using the insert command we are creating the rows, and rows are nothing but the records, which means what? One row is one record. So ये ऐसे इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? We are going to insert data into the table here. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जो DML कमांड है वो यूज करेंगे, and to use it we are going to firstly have its syntax. So syntax of the insert command. देखिए कैसे करते हैं. देखिए insert into अभी table name and next one is values. ठीक है, और लास्टली हमको सेमीकोलन देना है. insert into table values. देखिए अभी values में हम लोगों को क्या करना है? value 1, value 2 and so on, ऐसे जो है हम लोगों को इंसर्ट करना है. तो फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ value 1,
value 2 and so on based on the columns. Here I will write the comment. Note that the values are inserted based on the column names and their types. ठीक है, सो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए देखिए हम लोग एग्जांपल क्या लेंगे, insert into student values. First one is the roll number was there I think and name of the student ABC. ABC को मैंने सिंगल कोट्स में क्यों डाला है, बिकॉज इट इज व्हाट, कैरेक्टर फॉर्मेट. सो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम्पल जो है वो यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, सो आई विल मूव टूवर्ड्स द MS एक्सेस. देखिए रोल नंबर और एस नेम है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसको. क्रिएट में जाती हूँ मैं फर्स्टली, देन आई विल गो टू क्वेरी विजार्ड. SQL में ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग और फिर ऐसे भी जा सकते हैं. सो insert into student values, right? 12 and what was the name, ABC, right? ABC. Okay, and lastly semicolon. Run. देखिए रन करने के बाद आपको एक वार्निंग आते हैं, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज. वंस यू क्लिक you can't use the undo command to reverse the changes. Are you sure you want to append the selected rows? I will say yes. देखिए अभी यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको रिफ्रेश नहीं किया है. देखिए रिफ्रेश कर दिया, आप लोग देख सकते हैं 12 and ABC इजीली यहाँ पर इंसर्ट हो गया है. अभी मैं नई वैल्यू डालती हूँ यहाँ पर 13. okay, 13 will be there. And the value which I am going to insert is instead of ABC I will insert X, Y, Z, X, Y, Z. Okay, that is sufficient. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये वैल्यूज जो है SQL व्यू में है. अभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा. क्वेरी 1. ओके, क्वेरी 1 सेव हो गई, पर अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रन नहीं किया है. ओके, सो अभी इसको रन करना है तो हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा, फिलहाल हम लोग जाते हैं इसकी डिजाइन व्यू में. ओके, और अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको क्लोज करके फिर से ओपन कर देते हैं. देखिए अभी सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, you are about to run an append query that will modify data in your table. Are you sure you want to run this type of action query? ठीक है, बाद में हेल्प के लिए जो ऑप्शन है वो आपके लिए रहेंगे. You are about to append one row. Once you click yes, you can't use the undo command. Same thing. Yes. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, yes. So easily data is going to be inserted here. अभी फिर से मैं रन करती हूँ, देखते क्या होता है. यस, अभी फिर से मैं क्या कर देती हूँ, रिफ्रेश. देखिए डेटा जो है वो इंसर्ट होते जाता है जितनी बार भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी जो है वो यूज करते हैं. डिजाइन व्यू में जाके हम लोग देखते हैं डिजाइन कैसे है इसकी. अभी यहाँ पर देखिए आप लोग, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, रोल नंबर जो है वो 12 और 13 जो है वो उसका डुप्लीकेशन हुआ है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी प्राइमरी की यूज नहीं की हुई है. That's why it is not running here. So प्राइमरी की कैसे यूज करनी है वो भी हम लोग देखने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में. सो अभी ये देखिए, all the data values we are going to insert will be totally depend upon the column names. और इसकी ऑर्डर भी जो है वो कॉलम नेम्स के हिसाब से भी है, सही रहनी चाहिए. अभी जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, अभी दो वैल्यूज है स्टूडेंट की, कौन सी,
कहाँ पर है हमारी स्टूडेंट की क्रिएट टेबल की, हाँ, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम ये दो वैल्यूज है। पर अगर हम लोगों ने स्टूडेंट नेम पहले लिख दिया और रोल नंबर सेकेंडली लिख दिया तो दैट विल बी नॉट अलाउड, दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर SQL। और व्हाट विल हैपन, उसके डेटा टाइप जो है वो मिसमैच होने की वजह से क्वेरी जो है वो रन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर वो भी करके देखते हैं हम लोग। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज कौन सी रहेंगी पहले देखते हैं हम लोग। ABC डालते हैं और उसके बाद हम लोग 14 डालते हैं और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करती है। अभी मैं ये क्वेरी रन करती हूँ। आर यू श्योर अबाउट, देखिए, Microsoft Access can't append all the records in the append query. Microsoft Access set one field null due to a type conversion failure and it didn't add 0 records to the tables due to key violations, 0 records due to lock violations and 0 records due to validation rule violations. Do you want to run the action query anyway? Yes कर दिया। अभी देखिए क्या होता है, वहां पर क्वेरी जो है वो रन नहीं होती है। That's why it is very important to follow the order of the columns. ठीक है, वैल्यूज कौन से एंटर कर दी, सपोज मैंने 15 एंड PQR जो है वो एंटर कर दी और मैं क्या कर देती हूँ, उसको अभी सेव कर देती हूँ एंड आई विल रन इट। यस, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ओ, मुझसे गलती से आई थिंक कोई और टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है, नो प्रॉब्लम, क्लोज। I will open its design view and I will try to run it. Insert into student values 14 and single quotes में PQR and I will add semicolon। ठीक है, and I will try to refresh it। ओके, शायद ये क्वेरी में एरर आने की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेरी जो है वो डिलीट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको एक बार फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। I will delete this query. So I will create it again, query design and SQL view. Insert into student values 14 and what I was saying, PQR semicolon and yes, so we will try to see whether changes are happened or not। उसके लिए हमको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। यस, देखिए वो पिछले जो है बार जो हम लोगों ने रिकॉर्ड सेव किया था वो भी रन हो गया। सो ओके, सॉरी, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। वो बार बार जो है वो इंसर्ट हो गई है वैल्यूज, जस्ट वो ठीक से रिफ्रेश नहीं हो रहा था। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं डायरेक्टली। अभी क्वेरी के थ्रू भी हम लोग डिलीट करेंगे, बट दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स। ओके, 14 PQR 15 पहला वाला जो है वो इंसर्ट हो गया है। अभी मैं क्या कर देती हूँ, 14 SSS ऐसे लिख के आई विल सेव इट। And I will refresh it।
ठीक है, वो डेटा जो है वो आ गया है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि कभी कभी रिफ्रेश करना रह जाता है या फिर क्वेरी कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पर एरर्स जो है वो आ गए हैं। आई विल क्लोज इट फॉर नाउ। एरर्स की हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है क्वेरी यूज कर ली है। अभी देखिए, अभी हम लोग देखें हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करना है वो भी हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा है। अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग हमारे डेटाबेस में जो है, ठीक है, एक क्वेरी जो हम लोग क्लोज कर देते हैं। आई विल क्रिएट न्यू क्वेरी, क्वेरी डिजाइन। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और मैं लिख दूंगी यहाँ पर 21। ओके, मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दी है। ध्यान रखिए यहाँ पर कॉलम जो है वो यूज नहीं किया है। देखिए नेम ऑफ क्वेरी वैल्यूज एंड डेस्टिनेशन फील्ड्स आर नॉट द सेम। ओके, देखते हैं अभी क्या होता है फिर। अभी इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। एंड आई विल ट्राई टू सेव इट। ओके, देखिए यहाँ पर, ओ सॉरी, वैल्यूज। एंड व्हाट आई विल डू, देखिए and I will try to refresh it. Okay, I will close it and I will try to refresh it. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, and I will refresh it. वो डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। किस वजह से नहीं हो रहा है, देखिए इफ यू गो टू द सिंटैक्स, अभी यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, and I will try to run it. एक डेटा मैंने उसमें ऐड कर दिया and I try to refresh it. देखिए सो यहाँ पर क्या होता है जनरली, अभी अगर समझो आपको ऐसा रिकॉर्ड करना है कि कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर यार आपके नेम आपको बाद में मिलने वाले, आप इंसर्ट करने वाले हो, या फिर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, यू आर हैविंग द नेम्स ऑफ दैट स्टूडेंट, बट द प्रॉब्लम इज आपके पास उसका रोल नंबर नहीं है फिलहाल के लिए। सो ऐसे जो एरर्स है यहाँ पर इंसर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितने कॉलम से उतनी ही आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो। सो टू अवॉइड दीज थिंग्स we can use the null, yes, null, null values to be inserted into the what we can say table. So ये null value कैसे कर सकते, देखिए in an insert command only those columns can be omitted that have either default value defined or they allow null values. Likewise we can write here like that. Suppose I can modify this query, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लोज कर देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या कर देती हूँ, पुरानी जो क्वेरीज है वो डिलीट कर देती हूँ। सो हियर अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 34 एंड आई विल राइट इट एज नल। देखते हैं क्या होता है एंड राइट, यस। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देती हूँ, देखिए 34 एंड नल, इट इज गोइंग टू इंसर्ट ब्लैंक देयर। सो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नल कॉमा
अभी वैल्यू में दे दूंगी यहाँ पर BBB and I will save it. Okay. And इसको मैं क्लोज कर देती हूँ फिलहाल and I will run it. Yes. अभी इसको क्या कर देते हैं हम लोग रिफ्रेश. देखिए पहले वाले कमांड में हम लोगों ने क्या कर दिया, नल वैल्यू जो है स्टूडेंट नेम को लिख दी एंड नेक्स्ट कमांड में हम लोगों ने क्या कर दिया, रोल नंबर जो था यहाँ पर वहां पर नल जो है यूज कर दिया. So that is the columns that are not listed in the insert command will have their default value and if it is defined for them, otherwise the null values are going to be used. So here if any other column that does not have a default value and is defined not null is skipped or omitted and or an error message is generated and the row is not going to be added. So to insert any specific value in a null as a null, so you can type null. So without using the double quotes or single quotes, we are using these null values that we have seen here already, and the value is going to be inserted there. Okay, so likewise we are going to use the null values. ठीक है. So अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि so just we will have the quick revision about it what we have seen in today's lecture. So we will have one short recap about it. So आज के lecture में हम लोग देने का what is mean by the SQL, then how the SQL classification is going to be done, that is data definition language, data manipulation language, and obviously we have seen the what is mean by the TCL also. Then हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा कि how to run, that is running queries in MS Access, वो कैसे करते हैं. And lastly we have seen how to create tables using SQL and how to insert the data into the SQL. So उसके लिए हम लोगों ने देखा कि create कमांड की क्वेरी की जो होती है वो कैसे यूज होती है. Then nextly हम लोगों ने देखा insert कमांड, that is insert data into table, वो कैसे यूज कर सकते हैं SQL कैसे यूज करता है और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं. So that's all for today's lecture, students. So we will continue with the topic in the next lecture. Till then, bye. So friends, at the end of this session, let me tell you about the offers for both Iconic and Plus subscribers. That offer is going to end on 2nd August 2021. So what are these offers? These are the exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12. So offers ऐसे रहेंगी. If you are having subscription for 12, 15 and any 18 month, that is for the CBSE subscriptions, then you are going to have the 2 months totally free subscription. And if you are having the subscription for 24, 36 and 48 months, then you will totally get the 4 months CBSE free subscription. And lastly, if you are having the subscription for 60, 72 and 84 months, then you are going to have the free CBSE subscription for total 6 months. So same वैसी ऑफर है कि आपके लिए, that is creative corner subscription. That is if you are having the 12, 15 and 18 month subscription, then you will get totally 2 months free subscription. If you are having 24, 36 and 48 month subscription, then you are going to have totally 4 months free subscription for creative corner. And if you are having 60, 72 and 84 month subscription, then you are going to have totally 6 months free subscription for creative corner subscription. And yes, obviously you are going to have the flat 10% discount on purchasing Plus subscription for all durations. And this mega offer is going to have valid for the first 500 subscribers. That is पहले 500 subscribers को ही ये जो offer है वो valid रहेगी. So let me tell you about the CBSE latest guidelines that are live on the Unacademy. As you know that CBSE pattern is changed for this year now. So new batches are already started from the 19 July for CBSE Class 9th and CBSE Class 10th. So ये batches कैसे रहेंगी? That is batches will be dedicated to term 1 and these will be completely aligned with the new CBSE guidelines. And obviously all subjects are going to be included here. And mode of conduction, that is mode of delivery, will be both in Hindi as well as English. So your term 1, this examination is going to happen in 3 months. So what are you waiting for? Just enroll for the
Unacademy. So let me tell you about the complete term 1 syllabus. That is mega launch every Mondays and new batches for doubt clearing and NCRT exercises. So the complete term 1 syllabus, that is for the maths and science, and the CBSE class 9th is going to start from the 10th of August 2021. जी हाँ, सो यहाँ पर आपके लिए मैथ्स रहेगा, साइंस रहेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी रहेगा उसमें. Then you are going to have the term 1 preparation via MCQs for maths and science. ठीक है, सो ये CBSE क्लास 9 के लिए रहेगा. सो वैसे ही द टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs एंड मैथ्स फॉर CBSE क्लास 10 भी रहेगा. एंड द डेट स्टार्ट डेट विल बी फ्रॉम द 9th of August 2021. सो यहाँ पर हमारे पास मैथ्स, साइंस एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाएंगे. देन पावर पैक बैच फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच, which is going to start from the 9th of August 2020 and for CBSE class 10. So that किस बात की है students? You can have my code, that is TD Live, for the with 10% discount for Unacademy Plus subscription. So you can have the ask me anything the sessions, that is what, why, where, when and who, how. Likewise, if you have any doubt regarding your subjects, so that sessions will be available for you. So with that particular subject, we can ask any particular doubt related with the any topic. So let me tell you about the Plus and Iconic subscription. देखिए, Plus is what? It is a basic plan, and Iconic जो है वो Plus subscription का जो है वो advanced है. That is it will take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. So let me firstly tell you about the Plus subscription. That is in Plus subscription we are going to have India's best educators, then interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs. So वैसे Iconic के लिए देखिए क्या रहेगा. India's best educators will be there, then interactive live classes are there, then live tests and quizzes will be there, then structured courses and PDFs are there. ऑब्वियसली प्लस के साथ साथ आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा, सारे प्लस के फीचर्स जो है वो मिलेंगे. उसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटर, देन लाइव डाउट सॉल्यूशंस विल बी देयर, देन पेरेंट कनेक्शंस आर देयर एंड स्टडी प्लानर्स आर देयर. ठीक है, सो लाइव डाउट सॉल्यूशंस में आपको क्या रहेंगे, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको जो कुछ भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे. एंड ऑब्वियसली द पेरेंट टीचर कनेक्शन विल बी देयर सो दैट you will have the more focus on your progress. And obviously we are going to provide you the study planner also. So you can select the Plus subscription or Iconic subscription, और link जो है वो description में दी हुई है already. So you can enroll for either Plus or Iconic or both. So let me tell you about the total package for the Plus and Iconic subscriptions. देखिए वो कैसे रहेंगे. पहले I will tell you about the Plus and Iconic subscription for CBSE class 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप 9th का लोगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, उसके साथ साथ 10th, 11th और 12th का जो है वो भी बेनिफिट आपको इसके साथ मिलेगा. देन प्लस सब्सक्रिप्शन में देखिए कैसे रहेगा. फॉर 3 months you are going to have the whole total package as 7,500 with 2,500 per month. If you are going to have for 6 months, then you can have for the 10,000 package, and for per month it will be 1,667. Now if you are going for the 12 months, then you will get package of the totally 15,000. Now if you go for the 15 months, then you are going to have package of the 18,000. Now if you are going for the 18 months, then you will get the package of totally 20,000. Now if you go for 24 months, then total package will be of the 25,000. Now if you are going to choose for the 36 month subscription, then you are going to have the 889 per month with 32,000 whole package. Now if you go for the 48th month, then you will get the package of 830 per month with 40,000 for the total 48 months. So ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देखिए फॉर 3 months you are going to have package for 4,000 per month with 12,000 for 3 months. Now for 6 months you are going to have 2,833 per month with 17,000 for
whole 6 months. Now, if you go for 12 months, you will have the package of after the 28,000. If you go for 15 months, you will get the package of 32,000. If you go for 18 months, you will get the package of the 35,000. If you go for 24 months, then you will get the package of the 48,000 with 2,000 per month. Now, if you go for 36 months, then you will get the package of the 66,000 with 1,833 per month. Now, if you go for the 48 months, then you will get the package of the 83,000 for whole 48 months. सो ये हो गया क्लास 9 के बारे में. वैसे ही क्लास 10 के लिए 10th 11 12 का सब्सक्रिप्शन जो है कैसे रहेगा देखिए. प्लस के लिए कैसे रहेगा 3 months for 7,500, 6 months for 10,000, 12 months for 15,000, then 15 months for 18,000, 18 months for 20,000, 24 months for 25,000, 36 months for 32,000. सो वैसे देखिए आइकॉनिक के लिए कैसा सब्सक्रिप्शन रहेगा. आइकॉनिक जो है वो प्लस का एडवांस रहेगा. फॉर 3 months it will be 12,000, for 6 months it will be 17,000, then for 12 months it will be 28,000, and for 15 months it will be 32,000, then for 18 months it will be 35,000, and for 24 months it will be 48,000. वैसे ही for 36 months it will be 36,000, and you can use my code with the flat 10% discount, that is TD Live. So let me tell you about the India's largest scholarship state. That is, we are introducing you the India's largest scholarship state, that is Unacademy compact. So you can win scholarship worth rupees 1 crore. So ये compact जो है it will be on the every Sunday, and the link is given in the description below. So ये compact scholarship test कैसे होती है? That is it is one of the formula for success. एक तो competitive exam भी हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, and if you win, you will get the reward also. So it will be for CBSE Class 9 and 10. And आने वाला जो compact है it is on the 8th August at 11 AM. So देखिए इसका पैटर्न कैसे रहेगा. There will be 30 questions for 45 minutes. You will have the free live test on your Android mobile. You can have your if you are having your laptop, you can use that also. Then test will be obviously in both English and Hindi language. So as per your comfort, you can choose Hindi or English language for the scholarship test. And yes, obviously it is a big chance to win the scholarship of worth rupees 1 crore. So this किस बात की है, you can enroll for the scholarship test, and the link is given in the description below. So just note down the date. The compact will be on 8th August at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription with my referral code, that is TD Live. And yes, obviously you can download the Unacademy app now with Google Play, or you can download it on the Apple Store. So you can use all these features for free using my code TD Live. So Unacademy, let's crack it. So that's for all today's lecture. We will meet in the next session with new topic. Till then, bye.